Between the ocean and the forest lies a place where all continents come together. Here you can walk paths no man has ever walked before. You will find no strangers, only friends you haven't met yet. A place where motion calms you down and serenity makes you move. Where the old traditions easily survive and are celebrated by all cultures. Fly with us to Suriname and discover the best-kept secret of the Amazon. FlySLM.com. भगवान महावीर जयंती थी और आज दूसरे महावीर जी हमारे हनुमान जी महाराज उनकी जयंती है। ये प्रभु की कृपा भारत भर है कि इतने सारे महापुरुष इस देश को मिले ताकि संस्कारों की ये धरती, संस्कृति की ये धरती सदैव पूरे भारत को और पूरे विश्व को एक दिशा देती रहे। महात्मा गांधी said so beautifully, what is the use of that fast speed which has no direction? The world today has amazing speed. The speed has given us everything. The speed can connect to the world, but today we are forgotten to connect to ourselves. एक कार में, in one car people are sitting. सबके हाथ में स्मार्टफोन है, 4 लोग हैं. They are trying to connect to their friends. They are trying to connect to others. The people who are sitting in the car, they are not talking to each other. वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं. कार में बैठकर, एक ही कार में बैठकर, they are trying to connect to the world. हम भूल गए जीवन में रिश्ते बहुत जरूरी हैं, लेकिन रिश्तों में जीवन हो वो उससे भी ज्यादा जरूरी है. आज तो हमने रिश्तों को भी किश्तों में जीना शुरू किया. एक वो महावीर जिनका किसी से कोई भी तो रिश्ता नहीं था, लेकिन चल पड़े अहिंसा के पथ पर और पूरे विश्व को एक दिशा दिखाई, एक डायरेक्शन दी. एक भगवान हनुमान जी, दूसरे महावीर भगवान
जिन्होंने समाज को एक अद्भुत दिशा दी। वो ऐसी दिशा दी, एक ऐसा मंत्र दिया, सब कुछ करते हुए अपने आप को एक दास भाव में रखा। कुछ भी पूछो सब श्री राम जी की कृपा से। यही जीवन का मंत्र है। अपने से नहीं बल्कि उसकी मर्जी से, उसकी कृपा से। जब हम ये मंत्र अपने जीवन का मंत्र बना लेते हैं, एक तो उसकी कृपा से वी आर जस्ट mere tool, an instrument. The moment we become tool, मेरा यह अनुभव है कि you become the tool and he becomes the team. It's not that he sends the team to complete or to fulfill anything. He becomes the team. हमको नहीं लगता, हमको लगता है कि शामू आया कि रामू आया, सलीम आया कि सोहन आया, लेकिन सच बात तो ये है वो खुद ही टीम बन जाते हैं किसी भी काम को पूरा कराने के लिए। आज जब हम हनुमान जी की जयंती मना रहे हैं, एक तो ये संदेश कि हम एक टूल बनकर संसार में काम करें, एक निमित्त बनकर। थिंग्स आर हैपनिंग, देयर इज अ डिवाइन डिजाइन। इन द डिवाइन डिजाइन so many things are happening. In that divine happening, how we have to happen, that's very important. ये हमें देखना है, हम कैसे घटते तो हम भी हैं, लेकिन दूसरों को घटाने के लिए, मिलते तो हम भी हैं दूसरों को मिटाने के लिए। हमें मिटने और मिटाने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे से मिलने और मिलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, जीवन को आगे बढ़ा। यही तो महावीर का मंत्र, जियो और जीने दो। जियो और जीने दो में केवल आदमियों को नहीं, वी डोंट टॉक अबाउट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, वी टॉक अबाउट द लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स में पेड़ हैं, पहाड़ हैं, पौधे हैं, पानी है, सब कुछ है, ये नदियां हैं। आज हमने अपने को जीने के लिए इन सबको मिटाने की कोशिश की। जियो और जीने दो के मंत्र को मैं खुद जीने लगा एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। मुझे जीना है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। मुझे जीना है और जीने भी देना है सबको। ईशावास्यमिदं सर्वम यद किंच जगत्याम जगत। ये पहला सबक है किताबे खुदा का कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। हम एक ही तो है, सारे एक परिवार हैं। तो परिवार में केवल हम सब नहीं, बल्कि ये पृथ्वी, ये प्लैनेट, ये पेड़, ये पहाड़, सब हम एक पूरा परिवार बनते हैं। हम संकल्प लें कि हम आज के दिन संस्कृति की रक्षा की। हनुमान जी ने अहिंसा का व्रत दिलाया, भगवान महावीर ने। मैं तो कहता हूं ये भी हिंसा है। कल साध्वी जी बता रही थी about water and sanitation. In the nation today, 60 crore, 600 million people go for open defecation. To me, open defecation is total devastation. Imagine 30 करोड़ महिलाएं उसमें से। अंधेरे का जिस नारी ने हमको उजाला बांटा, जिस शक्ति ने, जिस मां ने हमको प्रकाश दिया, वो 30 करोड़ महिलाएं अंधेरे में, अंधेरे का इंतजार करती है कि अंधेरा हो तो मैं कहीं बाहर जाऊंगी टॉयलेट के लिए। मुझे तो लगता है, मुझे इसलिए याद आया कि अभी ललित गटानी हमारे बैठे हैं, इनके पिता में सब यहीं पर आए। अभी दिल्ली में एक विज्ञान भवन में कॉन्फ्रेंस थी, टॉयलेट फर्स्ट, नॉट इंडिया फर्स्ट। इंडिया फर्स्ट ओनली कैन हैपन व्हेन देयर इज अ टॉयलेट फर्स्ट इन आवर नेशन। बहुत जरूरी है, 30 करोड़ महिलाओं को बाहर जाना पड़े, एंड वी से इंडिया फर्स्ट। इंडिया ओनली कैन बी फर्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स। आई थिंक वी हैव बिल्ड एनफ टॉयलेट्स इन दिस नेशन। लेट अस टर्न आवर लाइफ फ्रॉम टेम्पल्स टू टॉयलेट्स। देयर मस्ट बी टेम्पल्स, आई एम नॉट अगेंस्ट टेम्पल्स, द टाइम हैज कम। हमें पहले शौचालय, फिर विद्यालय और फिर देवालय, ये बात होनी चाहिए।
अपने थोड़े थोड़े हनुमान जी का या किसी भी उसका हम फेस्टिवल मनाएं। फेस्टिवल के बाद, कल भी मैंने ये बात कही थी, अब पेड़े ना बांटें बल्कि पेड़ बांटें, पेड़ लगाएं, प्रकृति को बचाएं, पर्यावरण को बचाएं। हमारी जो सारे फेस्टिवल्स हैं वो प्रेरणा के लिए थे, पूजा के लिए नहीं। पूजा के लिए नहीं थे ये सब चीजें। हमने इनकी पूजा करना शुरू कर दिया, और ऋषियों ने पूजा भी इसलिए दी थी कि पूजा करते करते शायद कहीं ध्यान जाए, जिसकी मैं पूजा करता हूं उसकी मुझे रक्षा भी करनी है, उसको मुझे बचाना भी है। हमने गंगा जी की आरती तो की, लेकिन गंगा जी को प्रदूषित भी किया। हम गंगा जी की आरती एक दिन नहीं करेंगे तो चलेगा, गंगा जी की महाआरती उस दिन होगी जिस दिन हम गंगा जी को प्रदूषण से मुक्त कर देंगे। तो what was powerful? Their truth, their peace, which they exuded to the world, which they manifested through their existence. Just being there, I never remember I asked any question being in the jungle, being with all these masters, never. Just being there, sitting there, watching them. That's it. And all was given. All was felt. All was touched. So their peace, their truth is a magnet. And that magnet is with them. Your truth also can become a magnet. Head doesn't move up. And in this way, we're going to start moving the energy through your spine, through your lungs, and through your bloodstream. And then we're going to add one more thing. We're going to inhale, hold the breath, and press the tongue to the roof of the mouth, and flex as many times as you can on one mouth. You'll exhale, relax the tongue, and then inhale again, flex, and go. Keep increasing the flexes, keep increasing them. If this suits you, this is one you can remember. You can do every day. It's like starting the day so right. Because as you're supposed to release, but remember, when you come as forward as you can, then tip the heart up, and you'll start feeling it through your lungs, your heart, across your chest. And then if you wanted to give yourself an added touch, you would lock your elbows, and that would isolate the posture more at the heart center. That it is your lower, middle, neck, wherever it is, work it out right now. So you can just hold the breath passing in your soul. And it all passes afterwards. Relax. Don't let your head drop down low.
Keep your faces soft, your jaws soft, but move with great strength, not from your mind, but it's a good time to recognize the other person as you. Sometimes we think we're the only one going through it. And upward more, flex more, compress your tongue more. In these last 3 minutes, see if you can extend I have great pleasure in welcoming the Prime Minister of the Republic of India, His Excellency Narendra Modi. Today, I would like to draw your attention to another subject. When we talk about climate change, when we talk about holistic healthcare, when we talk about unity with nature, when we talk about getting back to basics, I would like to say something special about this subject. Yoga is our ancient, traditional, and invaluable gift. Yoga symbolizes the balance of body and mind, thought and action, achievement and self-control, and the coming together of human beings and nature. It provides a comprehensive vision of health and well-being. It is not merely physical exercise, but also a means of building harmony within oneself and with the world and nature. Yoga aims at transformation of our lifestyle, and its awareness can help us in our struggle against climate change. Let us work towards making a beginning in this direction with an International Day of Yoga.
The origins of yoga can be found over 5,000 years ago in the Indus Saraswati Valley civilization. Archaeologists discovered carvings, seals, and artifacts displaying yoga-like practices, poses, and greetings, similar to those found later in the depictions of Pashupati, Rudra, and the god Shiva. The word yoga comes from Sanskrit and came into popular usage during the Vedic period around 1000 BC. The word comes from the root yuj, which means to bind, to yoke, to align, or to hold. Yoga was well known across India and began to appear in Vedic scripture, particularly the Upanishads, as well as in Buddhist and Jain teachings of that age. The Upanishads speak of 4 types of yoga practices: mantra, or the repetitions of sacred sounds; laya, or devotional connection to a higher being; hatha, or the channelization of internal energies; and Raja Yoga, or what came to be known as Dhyan or Ashtanga Yoga. In the 2nd century BC, the teachings of yoga were codified into a written scripture known as the Yoga Sutras of Patanjali. Atha Yoganushasanam. Om, now yoga is explained. Yoga is the stilling of the modifications of the mind stuff so the seer can see their true and original selves. According to Patanjali, the purpose of yoga is to overcome the attachments to the physical world in order to realize one's true consciousness. According to the Taittiriya Upanishad, the human being is made up of 5 layers or koshas that act in unison. When the koshas are out of balance, they lead to disease, disharmony, and suffering. When brought together through yoga, they lead to a state of perfect health, a meditative mind, and pure bliss. To align the koshas together and restore harmony, Patanjali prescribed a system for yogis called Ashtanga, or the 8-limbed path. Throughout India's long history, yoga has been integral to everyday life, and most religions and philosophies used its practices in their rituals and methods. In the Middle Ages, 2 great teachers revived the practice of yoga. In the 8th century, Adi Shankara brought the Upanishads and yoga back into popular consciousness, and Gorakshanath of the Nath Sampadaya brought about the revival of Hatha Yoga at around the same time. From the 1890s, many Indian teachers brought yoga to the world, like Swami Vivekanand in 1893, who introduced the world to Vedanta and Raja Yoga, and Swami Yoganand in 1920, who introduced the world to Kriya and Kundalini Yoga. Teachers like Swami Shivanand, Swami Rama, Swami Satchitanand, Swami Kovalayanand, Sri Yogendra Ji, and other great yogis also spread the deeper aspects of yoga around the world. One of the most influential yoga teachers in the 20th century was Sri Krishnamacharya. His students B.K.S. Iyengar, K. Pattibha Joyce, and his son Desikacharya became 3 of the leading exponents of yoga and helped spread it around the world. Today, yoga has gone well beyond those early pioneers. Teachers like Sri Sri Ravi Shankar, Pujya Swamiji, Baba Ramdev, Swami Niranjan, and Sadguru Jaggi Vasudev are keeping the flame of classical yoga alive around the world. The benefits of yoga are now being recognized by science and mainstream medicine. In India, the healing powers of yoga have been known for thousands of years, and along with Ayurveda, has been critical to Indian healthcare in the prevention of diseases, promotion of higher consciousness, and the management of wellness, to give the practitioner freedom.
The practice of yoga brings about balance, well-being, happiness, and the freedom to live life fully. As more and more people take up yoga around the world today, we may actually see the beginning of a global shift in consciousness, leading to a more balanced and harmonious planet. Yoga practitioners become more conscious consumers, better human beings, more environmentally conscious, and good leaders. This is the power of yoga, and it can only be good for the world. On 11th December 2014, the United Nations passed a resolution making 21st June the International Day of Yoga. 177 nations co-sponsored the resolution, a record in UN history. Flybus Travel, uw vertrouwde reisbureau. Lid van IATA, SGR, ANVR. Boek nu voordelig al uw reizen naar Suriname, Curaçao, Dubai, India, Mauritius en nog veel meer bestemmingen. Voor actuele acties check flybustravel.nl of bel 020 75 29 753. Flybus Travel, where dreams come true. NV Samenwonen biedt betaalbare eigendomskavels aan in Kommerwijnen. NV Samenwonen werd opgericht in januari 2012. In hetzelfde jaar kocht de NV een eigendomsareaal gelegen in het hartje van Kommerwijnen. Eco-project Jachtlust is een project in ontwikkeling. In 4 jaar tijd is het gebied met zorg gecultiveerd en oogt aantrekkelijk vanaf de entree. Het karakteristieke van deze natuurlijke omgeving zullen wij preserveren. En dat behoeft uiteraard enig onderhoud. De onderhoudskosten voor een onbebouwde kavel zijn 40 eurocent per vierkante meter per jaar en voor een bebouwde kavel 120 euro op jaarbasis. Op de plattegrond is Eco-project Jachtlust te zien. Het groene gedeelte is reeds verkocht vanaf 2013 tot heden. Het overige deel is beschikbaar voor verkoop. Deze kavels bieden wij u graag voor maar 27,50 euro per vierkante meter aan. 27,50 euro per vierkante meter. Bij contante aankoop krijgt u korting. Er zijn ook financieringen mogelijk. Investeer waardevast voor uw kind of kleinkind en bied hen een solide basis voor hun toekomst. Neem contact met ons op en laten we samen kijken naar uw mogelijkheden. NV Samenwonen is telefonisch bereikbaar op 88 70 612 of 7599 599. U kunt ook mailen naar nv-samenwonen@hotmail.com. En als u alle informatie nog eens rustig wil nalezen, kunt u ook onze website bekijken: www.nvsamenwonen.nl. Koop een kavel bij ons. Jij en wij. Samen leggen we een basis voor een mooie toekomst. Actie op eigendomskavels tot en met 30 mei. Aanbetaling 5.000 euro, aflossing per maand 275 euro. Dit actietarief is geldig vanaf nu tot en met uiterlijk 30 mei.